Shyamali and Gudia, a quirky duo. Shyamali was a firecracker. She was full of life and energy. Gudia, her daughter-in-law, was the opposite. She was sweet and simple. They were like chalk and cheese. Shyamali loved to tease Gudia. Gudia, with her innocence, often became the target of Shyamali's jokes. Despite their differences, they shared a special bond. They were family after all. Shyamali and Gudia's day began with playful banter. As the first rays of the sun kissed the village, the two women would be found in the kitchen, their laughter echoing through the walls. The aroma of freshly made rotis filled the air, mingling with their cheerful voices. Shyamali would often find something to tease Gudia about. It was their way of bonding, a tradition passed down through generations. The older woman's eyes would sparkle with mischief as she found new ways to poke fun at her daughter-in-law. Sometimes it was about her cooking, sometimes about her forgetfulness. Gudia, did you forget the salt again? Shyamali would ask, her tone a mix of mock sternness and affection. Gudia would laugh, knowing it was all in good fun. Gudia, the rotis are a little too thin today. Are you trying to save flour? Shyamali would exclaim, her voice filled with playful accusation. The younger woman would blush, her hands busy with the dough. Shyamali would say with a twinkle in her eye, her teasing was never meant to hurt, only to bring a smile to Gudia's face. It was their special way of communicating, a language of love and laughter. Gudia would just smile shyly. She knew her mother-in-law meant no harm. In fact, she cherished these moments, knowing they were a sign of acceptance and affection. She knew her mother-in-law meant no harm. It was all a part of their daily routine. These playful exchanges were woven into the fabric of their lives, a testament to their close-knit relationship. It was all a part of their daily routine. The banter, the laughter, the gentle teasing. It was what made their household feel alive and vibrant. It was a dance they performed every day, a dance of words and emotions. Their playful arguments were a source of amusement for the whole family. The children would giggle, the elders would smile, and the house would be filled with warmth. It was these moments that made their house a home, a place where love and laughter reigned supreme. One day, Shyamali decided to teach Gudia a lesson. She had been observing Gudia for a while now, noticing how she often took things for granted. Shyamali felt it was time to instill some responsibility in her. Gudia, she said, I need your help with the groceries. This was not an unusual request, but today Shyamali had a different plan in mind. Sure, Maji, Gudia replied, always eager to please. She had no idea what was coming her way. From now on, write down the names of things that are running low. Shyamali handed her a notepad and a pen, her eyes twinkling with a hidden agenda. We need a system, Shyamali instructed, trying to hide a mischievous smile. She knew this task would teach Gudia the importance of being organized and attentive. Gudia, ever obedient, took a piece of paper and a pen. She was determined to do her best, unaware of the lesson Shyamali was trying to impart. She diligently started noting down the items Shyamali mentioned. Sugar, lentils, rice, she muttered as she wrote. Each item was carefully listed, and Gudia felt a sense of accomplishment. As she continued, Shyamali watched with satisfaction. This simple task was more than just about groceries. It was about teaching Gudia the value of responsibility and foresight. Gudia, engrossed in her task, had no idea she was learning a valuable life lesson. अगली सुबह एक बड़ी गड्ढा बढ़ा हो गई। गांव में सुबह का समय था। सूरज की किरणें धीरे धीरे घरों पर पड़ी चढ़ रही थीं और लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। रसोई में अफरा तफरी मची हुई थी। हर कोई इधर उधर भाग रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। गुडिया, आटा कहाँ है और नमक? श्यामली ने जोर से पुकारा। रसोई की अलमारियां खाली थीं और श्यामली का चेहरा चिंता से भर गया था। सब कुछ खत्म हो गया है, श्यामली ने निराशा से कहा। श्यामली ने जानबूझकर घबराते हुए कहा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी मुस्कान भी थी। गुड्डिया दौड़ती हुई आई, उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने जल्दी से श्यामली के पास आकर पूछा, क्या हुआ मां जी? लेकिन मां जी, मैंने सब कुछ लिख लिया था जैसे आपने कहा था, गुड्डिया ने घबराते हुए कहा। उसने कागज की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी आंखों में विश्वास था कि उसने कोई गलती नहीं की है। श्यामली ने कागज छीन लिया और उसे देखा। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसके चेहरे पर एक बढ़ी मुस्कान फैल गई। उसने हंसते हुए कहा, गुड्डिया, तुमने सच में सब कुछ लिखा है?
गुड्डिया ने वास्तव में सब कुछ लिखा था, लेकिन केवल वे चीजें जो श्यामली ने पिछले दिन बताई थीं। लेकिन उसने नई खत्म हुई वस्तुओं को सूची में अपडेट करना पूरी तरह से भूल गई थी। श्यामली ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं गुड्डिया, हम सब सीखते हैं, अगली बार ध्यान रखना। गुड्डिया ने शर्माते हुए सिर हिलाया और दोनों हंस पड़ी। श्यामली हंसी में फूट पड़ी। अरे गुड्डिया, तुम तो कमाल हो, उसने पेट पकड़ा ढाकते हुए कहा। गुड्डिया पहले तो उलझन में थी, लेकिन फिर उसे समझ में आया। वह श्यामली की चाल में फंस गई थी। एक राहत की लहर उसके ऊपर से गुजरी और वह भी हंसने लगी। उनके हंसी की आवाज से पूरा घर गूंज उठा। यह हंसी शुद्ध खुशी और समझ की थी। उस दिन के बाद से सूची वाली घटना उनके परिवार में एक किंवदंती बन गई। ये उनकी खेल खेल में होने वाली बातचीत और गुड्डिया की मासूमियत की याद दिलाती थी। श्यामली गुड्डिया को चिढ़ाती रही और गुड्डिया अपनी मासूमियत से श्यामली को चकित करती रही, लेकिन उनके बीच का बंधन हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होता गया। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण थी कि हंसी वास्तव में लोगों को करीब ला सकती है। श्यामली और गुड्डिया की कहानी हमें रिश्तों के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह बताती है कि थोड़ा सा हास्य और समझ बहुत दूर तक जा सकते हैं। जीवन को हमेशा गंभीरता से लेना बहुत छोटा है। थोड़ी सी खेल खेल की बातचीत किसी भी रिश्ते में मजा ला सकती है। जैसे श्यामली और गुड्डिया हंसी और समझ को अपने बंधनों की नींव बनाए।